एक एग्जांपल लेते हैं संतोष। आई थिंक कंसेप्चुअली अपने को थोड़ा समझने में और बेटर हो जाएगा। कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स का एग्जांपल या कोई ट्रेड आपको लगता है ओरिजिनेट हो रहा है, इसको अपने ये पूरा प्रोसेस को समझ सके उससे। चलिए एक काम करते हैं। पहली बात कि आपको पता है कि कल रिलायंस का रिजल्ट है, सो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी काफी हाई है। आप वांट टू जहाँ पे आई टू वैलिडेट, बट अगर आपको वैलिडेशन करना है तो यू कैन यूज इधर माई टूल, मे बी कॉन्सेप्ट जो है उनका है, या तो आप डिफाइन एज है। सो आजकल सारी जनता आपको टूल्स दे देती है जहाँ पे आप जाके वॉलेटिलिटी को मेजर कर सकते हो। आईवीआर आईवीपी कोई भी फॉलो कर लो, इधर आईवीआर फॉलो कर लो, आईवीपी फॉलो कर लीजिए, या एचवीआईवी। ओके, सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी मार्केट क्लोज होने वाला है 20 मिनट्स में। सो लेट्स अज्यूम कि वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। ओके, एज वी नो कि कल रिजल्ट डेफिनेटली हाई होगा, हाई या तो वेरी हाई, दोनों के बीच में होगा। Okay, so now let's go to next step. I'm going to go on the Reliance chart. Okay, so I'll just go on the Reliance chart. Santosh, yeah, yes. Santosh, sorry to interrupt in the middle. मेरा I think नेट में थोड़ा इशू, मैं अपना वीडियो अभी बंद कर रहा हूँ ताकि क्या ये डिस्टर्बेंस भी रिकॉर्ड ना हो। ठीक है? Okay, sure. Yeah. Go ahead. And as you can see that कि ये रिलायंस थोड़ा सा ऊपर भाग रहा है और काफी ऊपर भाग चुका हुआ है ऑलरेडी। उसने यहाँ से यहाँ तक की रैली दे चुका हुआ है। एंड इफ यू सी कितना परसेंट ऊपर भागा हुआ है, तो काफी बिकॉज ऑफ हमारे फेसबुक के न्यूज के कारण इट वेंट ऑल द वे ऑलमोस्ट लाइक आपका काफी परसेंट ऊपर भाग चुका हुआ है। ओके, सो फ्रॉम अराउंड 800 ऑल द वे ऑलमोस्ट 71% इफ यू से सरप्राइजिंगली टच कर चुका हुआ है लगभग। ओके, इफ यू से अराउंड हियर 66% लोअर टू वन वे। सो आई डोंट थिंक कि फर्दर उसको ऊपर भागने की ताकत है, बट वी हैव टू गिव सम रूम हियर एंड वी हैव टू गिव सम रूम ओवर हियर। तो एक काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमें रिलायंस में एक ट्रेड बनाना है। And although I do some validation, जैसे आपको बताया, I don't want to see my tools, otherwise जनता बोलेगी प्रमोशन हो रहा है, and then we go. नहीं, आप ऐसा मत सोचो। अरे संतोष भाई, आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारे यूजर्स हैं, उनको पता है कि कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। तो आप अपना जो भी टूल यूज करते हो वो ओके, सो लेट मी शो यू। मैं रिलायंस जाके बोलते हैं रिलायंस की आपको आईवी को डाउनलोड कर लीजिए। तो वो आईवी को डाउनलोड कर लेता है यहाँ पे, एज यू कैन सी, एंड देन इज गोना डाउनलोड माय spot data, and then is going to show me कि yes आपकी अंडरलाइन की प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा डाउनलोड होने में anyway, and then is going to show you कि आपकी वॉलेटिलिटी लेवल है क्या। so as we can see as expected कि वॉलेटिलिटी लेवल की हमारे यहाँ पे हाई है। ये बोल रहा है कि इससे में आपको दुकानदार बनने में फायदा है। you have to go for credit strategy rather than going for a debit strategy, and if you're saying कि if you have a non-directional view then go for either iron condor trade or iron butterfly trade, and if you have bullish view, आपको लगता है कि Reliance may move further up, then go for bull put spread because you have to become a seller, and if you have a bearish view then better go for buy call spread. Okay, then gives me some other information कि lot size क्या है। ये मुझे बता रहा है कि डायरेक्शन put call के हिसाब से, put call ratio के हिसाब से it is a sideways direction, versus if you add a trend also on that and over analysis करोगे तो हमको लग रहा है कि sideways to bullish लेने में थोड़ा सा फायदा है। so इसलिए saying कि bullish शायद और जा सकता है। Plus, इनसे बोला कि keep eye कि it has a tendency that it can, in a day also it can move as of now 5%. Okay, based on the last 14 days ATR. Okay, so that way it gives you some rough idea कि आपको trade क्या लेना है। So now I've got कि मुझे non-directional लेना है and I want to go for a Reliance. I'll go on my tool and I'm going to say, hey Reliance का data download कर लीजिए। So let me open once again and then I'm going to download here, and then so I'll show you three different combinations. Okay. So let's go here and हम बोलेंगे Reliance का option chain, I need option chain, and then out of the box we will try to संतोष सॉरी बीच में इंटरप्ट करता जाऊंगा, मेरी आदत बुरी है, माइंड मत कीजिए। नो ये ऑप्शन ओरेकल अगर किसी को डाउनलोड करना हो और यूज करना हो तो वो आपकी वेबसाइट pasitechnologies.com में जाए। एब्सोल्युटली, वहाँ पे फ्री में है, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो स्टॉक्स में है और इंडाइसेस का है, बैंक निफ्टी का, उसमें हम बिल्कुल दे रहे हैं कि आप लाइफ टाइम यूज कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। Okay, so you can go there, you can download, you can use it as long you wish. Okay, so we're not putting any kind of restriction over there. Although हमने इसका एक छोटा सा कमर्शियल वर्जन भी बना रखा है, so that it will keep me motivated to do coding, छोटा सा अलग से करेंसी सपोर्ट के लिए। ओके, बट आम जनता 90% जनता is happy with this version because we have a with here. I've not removed anything. Okay, जो initially था, plus in fact we have added few more things. So now we download option chain here. Then we say, फिर से हम बोलेंगे iron condor बना दो. So let me make a different versions of iron condor. Okay,
तो यहाँ जाकर हम एक स्टैंडर्ड सा आयरन कॉन्डोर बना देते हैं, जो बोलते हैं 28 मई की बनाना है। आई डोंट वांट टू गो टुमारो वाला, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। सो उसने एक सैंपल सा ट्रेड बना दिया यहाँ पे, एंड यू कैन सी डायग्राम की यस ये ट्रेड लग रहा है कि इस ट्रेड में मुझे इतना फायदा है और इतना मुझे should be comfortable to lose this much, and I should be maximum profit potential is this much. Okay. क्या ट्रेड है संतोष भाई? ये ट्रेड में हम बोल रहे हैं कि 300, ये आउट ऑफ टेम्पलेट बना है, उसको कस्टमाइज नहीं किया अभी। ये बता रहा है कि 1380 के पुट को बेच दो, फिर बोल रहा है 1460 के कॉल को बेच दो, और फिर उसे 20 पॉइंट्स नीचे आप इंश्योरेंस ले लो और 20 पॉइंट्स आप ऊपर इंश्योरेंस ले लो, तो आपको मैक्सिमम ओवर 15 पॉइंट्स मिलेगा, मतलब 15 into 500 जो आपका रुपीज फॉर्मेट में हो जाएगा, एंड देन यू गोना लूज 4 पॉइंट्स, मैक्स 4.5 पॉइंट्स। ओके, पर ये ट्रेड मेरे कंफर्टेबल नहीं है, ऑल्दो लॉट ऑफ गाइस मैं को अट्रैक्टिव की ट्रेड में मुझे आरआर रेशियो लाइक मोर देन 3 आ रहा है, करेक्ट, बिकॉज आई एम गोना विन 15 पॉइंट्स, आई एम गोना लूज, सो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ट्रेड, क्योंकि क्या होगा इसमें हमारा रेंज छोटा होगा। इफ यू सी हियर, सो अपर पोटेंशियल इज जस्ट 3% अवे एंड लोअर पोटेंशियल इज जस्ट 4 पॉइंट्स बिलो दैट। ओके, सो ये थोड़ा सा रेंज छोटा हो गया, बिकॉज बफर इज हाउ मच हियर, दोनों कंबाइन करते तो 7, कैन आई कॉल इट 7% रूम, versus this guy saying कि it can move a 5% in a day also, इसका मूव कर सकता है, और हमारे पास लगभग 5 हफ्ते पड़े हुए अभी, ऑलमोस्ट वी हैव 5 weeks to go, so this 7% may be a slightly lower, so हम क्या करेंगे, गोना इंक्रीज द रेंज, सो उसको इंश्योरेंस को थोड़ा सा और सस्ता करते हैं, लेट्स गो एंड लेट्स मेक इट 40 points below here, and I'm going to increase by 40 points further up. Okay, and let's check अब ये range क्या हो गया. So now you can see that my range is further high. I have a 5% room on the upper side, I have 5% room on the lower side, and I have a potential to earn 17 points versus so I have a potential to earn 42 points versus I should be comfortable to lose 17 points. तो आपका डायग्राम कुछ payoff is looking that way. Still for me I want to increase the probability. Now यहाँ पे क्या कि profitability आ गई है, but we need to manage probability also. दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपको कितना कमाना है वर्सेस कितना लेना है, तो उसको हम थोड़ा सा और पिछले जाते हैं. ओके, लेट्स मूव, लेट्स सी द वे आई डू नॉर्मली. ओके, एंड लेट्स इंक्रीज फर्दर अप. इनफैक्ट अभी कितना है, यू कैन से 6.5% हियर रफली एंड 6% हियर versus I can earn 53 points and I should be comfortable to lose 26 points. So which trade do you think is better, the first one or the one which is now I'm going to show? If you compare both the trades, which one, or do you think this one is better? In fact, मैं आपको थोड़ा सा और इसको बुरा करके बनाता हूँ. So let's say the worst case scenario, 1216 and versus let's go here and let's make it 1580. Which trade do you think is better? Okay, इसमें 18 ने ये तो बुरा हो गया. Let me make it so fun. I think I mix up some there is some illiquid options are here, so that's the issue with the Indian market. So let's go further up. Illiquid आने पे it mix up because that was a illiquid, and let me go on the May. I hope now it will be much better, and let me make it asymmetrical हो गया, so I'll go back here. I'm gonna make it 1280. Okay, so do you think the first was better or second was better? First में I was maximum profit position of 45 points. I was losing around 17 points. Okay, versus this guy has a potential to earn 63 versus it can lose 36. So in the earlier case, the RR ratio was more than 3:1. Okay, I was expecting 3 reward and 1 risk, versus here it's like a 2:1. So which is better? पहला वाला ही. मैं तो 3:1 जितना risk reward. Yeah, a lot of guys will go on that कि मुझे RR ratio के हिसाब से वो ज्यादा better हो गया, because both trade may think better because my RR ratio is better, but you mix up कि ये width नहीं था उसमें. Okay, so what happens is once I take a trade, I have to see 2 things here. जनता, so let me show you what are those 2 things are there. So I'm going to open here. So guys, now normally they see the profitability because this is your profit potential versus this is how much you're willing to lose. Correct? This is your risk. And this is profit. Versus they forget about this one. Right. So this I call it a profitability of your trade. So they only focus on profitability of the trade rather than a probability also. And this is a probability. How much chances you're gonna win. Okay. So we need to balance both. We don't want to see in the isolation. Okay. So in that case, earlier 3:1 is good if you only focus on what? Profitability.
Versus if you Right. consider this trade, which is 2:1, in that case, my profitability is also balanced and my probability is also balanced here. Right. Because there hardly, I think 3% chances was over here and 3% here. So total 6% room was there, 6 to 7%, if I'm correct. Versus here, I have a room of how much? I have a room of roughly, if I'm correct, 14% room. So just think of, earlier it was a 6% room, a 7% room. Now it is a 14. It means I have increased the probability by almost 100%. अच्छा, संतोष भाई ये Can बात I? आप हिंदी में भी थोड़ी वापस से रिपीट करिएगा ना। श्योर श्योर। तो नॉर्मली जो जनता होती है वो केवल देखती है कि मुझे कितना कमाना है, कितना गंवाना है, ठीक है। बट चांसेस करेक्ट की करेक्ट स्टेट की सक्सेस फैक्टर कितना होना है, कितनी चांसेस है कि आपको सक्सेस हो जाएगा, वो भूल जाती है। तो आपको दोनों बैलेंस करना है। आपको बैलेंस क्या करना है कि आपको कितना कमाना है वो भी बैलेंस करना है, वर्सेस इस ट्रेड को मुझे सक्सेस बनाने के लिए क्या करना है। तो यू हाउ टू मेक अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ। जैसे हम मस्ती में बोलते हैं कि हमें पतला भी नहीं होना, मोटा भी नहीं होना, क्योंकि आप बहुत पतले हो गए तो आपको एक में गिर जाओगे, ठीक है। आप तो ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम। और आप ज्यादा मोटे भी हो गए देन में आप एक्टिव नहीं होंगे, चल नहीं पाओगे, कुछ काम के नहीं रहोगे। सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि करेक्ट बैलेंस बना के आपकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट भी होने चाहिए प्रॉपर। कि अगर इसमें आपकी हाइट ही करेक्ट बहुत बड़ी हो गई, देखिए आपका बॉडी बिल्कुल पतला हो गया, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। आप बहुत मोटे भी हो गए और सही हाइट बहुत छोटी हो गई, डजंट मेक सेंस। बट अगर आप काफी हाइट भी हो और काफी चौड़े तो चलेगा, आप नॉर्मल भी हो और बैलेंस चौड़े हो तो चलेगा। सो यू टू मेक इट दैट अप्रोच कि ये मजबूत रहे दोनों तरफ से, हाइट के हिसाब से भी मजबूत रहे एंड वर्सेस हॉरिजॉन्टली भी परफेक्ट रहे। सही है सही है। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.